Hey guys, so today we'll be discussing a very interesting lead code question called restore IP addresses. Now, there are a lot of YouTube videos which have apparently, touched this topic, but I would like to say something. Those YouTube videos are like a non-intuitive solution. They are the kind of solution which will, they are not very optimized. The next thing is that they are the kind of solution which cannot come up during the interview, and the thought process is also not something which is very clear over there. So that's why I thought ki let's go ahead and make a video on this one. And trust me, the solution which I'm going to present over here has a very good time complexity. So you will be totally impressed. By the time at the end of the video, you'll be like, wow. So let's get started. So we are given a string. Okay, this string has a length of this string can have a length between 1 to 20. Just remember this constraint, right? Remember this carefully because it will come spoiler alert. So the thing is that this string will represents only digits, and using these digits we have to construct a valid IP address out of this given string. So let's say that we copy this thing, and once we copy it, oh, I had some previous thing. So let's say that once we copy it, what might happen is that we might need to place the dot now, because we have to check if it represents a valid IP address. What can be the one possibility? We can place the dot over here, we can place the dot over here, we can place the dot over here, and we can place a dot over here. This would represent one possibility. Okay. What is the second possibility? The second possibility is that instead of placing this dot at this point, we will place it over here. So this becomes another valid IP, right? So how do we judge if a string is a valid IP or not? So let's understand the IP first itself before jumping to the string. So an IP address has a 4 segment to it. It has a 4 segments, 1, 2, 3, and 4, and it has a dot which separates these 4 segments. And how many dots it have? It will have 3 dots. Remember this, guys. The IP has 3 dots and segment as 4. Okay. Now these four segments will have some value. Now understand कि worst case में क्या हो सकता है? Worst case में all of them can have worst values, and they have specifically told that a integer can have a value between 0 to 25. So this can have a value of 25, 255, 255, and 255. Sorry, my bad. I said 25. So in the worst case, it can have a value of 255. So what will be the final, in the worst case, what will be the length of the string? So the length, s dot length, will be 3 into 4, that is equal to 12. This is in the worst case. But in the good case, what might happen is that there might be length of at least 1, because this cannot remain empty. This cannot remain empty. We have to fill some value. So we'll fill one value. Same over here, same over here. So in the least possible is that we can have at least s dot length. Minimum should be this, and maximum should be this. And s dot length will be 4 over here, right? Okay. So I hope this was self-explanatory to you guys. So remember these observations because they will come very handy. Now, since we know that the length of any IP address can max be 12, it cannot be greater than this. We can automatically reject all the strings with the length greater than 12, because 13, 14, 15, 16, no matter what you do, they are going to represent an invalid IP addresses. So take care of that. And similarly, in the worst case, in the minimum case also, if the length is below 4, like 0, 1, 2, 3, in that case also you need to reject those kind of solution and return an empty vector over here. I'm doing the coding in C++ because C++ is my default DSL language. You can try to convert. When I will start writing the code also, but once you're done, you can start in your. I mean, it's pretty straightforward for any given language. Also, you can just pretty much understand the concept and go ahead. So with this clear, let's go ahead and understand what are the further optimization which you can do over here, right? But before that optimization, the question says that this becomes an invalid string, IP addresses. Sorry, because why this is invalid? Because this segment starts with 0. This segment starts with 0, and it has further digits towards it, right? If a segment starts with 0 and its size is actually greater than the segment size, ऐसे बोलोगे segment size is greater than 1,
that means that segment becomes invalid. That segment becomes invalid. So note this observation also, because this also comes very handy. So that means 0 can be placed as a single in a given segment. No other elements, no other characters can accompany this 0. If there is 1 0, that means, and then that too at the start only I am talking only about the starting wala value, not the other values. Okay? So this observation also becomes clear. Right. Now, let's see how we can effectively solve this given question. So I'm going to first tell you how. So there you go. Now the only thing which is remaining is that we need to place dot. We need to place dot in such a way. There are different possibilities we can place dot. Okay. For the first segment, we can place the dot over here. We can place a dot over here, or we can place a dot over here. Okay. There are 3 different possibilities. After this, we cannot place a dot. Why? Because the value of this thing, will become greater than 255 to 255, right? And that becomes problematic. So we cannot do that. So that means this segment must end here, right? At max. And that means there are only 3 placements of the dot which I can effectively do, right? Same for this segments. Once I select this segment, right? Let's say that I place my first segment over here. Same for this segment. I can place my dot again here or here or here. So I need to effectively place these dots, right? I need to effectively place this dot. And let's say that I first place this dot over here at this point. So I need to check again this value, is it valid or not? Is it valid or not? Because let's say that if this was something like, let's say okay, I'll talk about this only. Okay, it becomes fun over here. So let's say I have, in one distribution, I have placed the dot over here, right? I have placed a dot over here, and after this distribution, I decide to place a dot at this point. Don't you think the entire thing will become, no matter what you do, this segment becomes invalid? I mean, after, you cannot count this segment because this segment value becomes 5 to 5. So we have to ignore these kind of combinations. Effectively, we have to ignore these kind of combinations, and we have to take care of that internally, right? So just be careful via that. So your placement strategy should be such that the effective value of that given segment is between 0 to 255, right? So these are the 2 things which we need to care about. And after this question becomes straightforward. But do you think any further optimization which you can do effectively? Think about it. You can take a pause over this section and you can think. So yeah, there is one given optimization which we can effectively do, and that I'm going to give you a hint of a Pigeon Hole principle. Yep. There are only few people who can think that we can effectively use a Pigeon Hole concept over here. And let me explain you how. Let's say that what can happen is that I place my dot at this point, right? So अब मेरे पास बचे कितने सेगमेंट, हमारे पास बचे कितने सेगमेंट? So the length is 3, 3 and 4, right? 3, 3 and 4. So what has happened, guys? If I selected placing a dot over here, then I know that there will exist a one segment. There will exist a one segment whose segment length will be greater than equal to 4, or you can say that, right? There will be a segment with a length of 4 at least, and actually it is not greater than equal to, it's equal to 4, and that's what Pigeon Hole principle tells. Because what might happen is that you can select this, but at the end somewhere you have to select a segment of length 4. And you know that in this given restore IP addresses, you cannot select a segment of 4. That becomes an invalid solutions. So after placing this dot, we can effectively perform a pigeonhole thing, and we can check if there can exist a segment with a length greater than 3. And how do we check that? So note, guys, we have placed one dot over here, right? So how many segments can exist after this point? It is dot plus 1. The dot count was, I was telling about the dot count, right? Once we place one dot over here, how many dot remains? 2. So how many segments are going to be there? Segment will be dot plus 1. So अगर 2 है तो इधर कितना हो जाएगा? 3 segments will remain, right? And what are the total values over here, right? There are 3
प्लस 3 प्लस 4. सो ओवरऑल मेरे पास कितने वैल्यूज बच गए? 6 प्लस 4 10. ठीक है. एंड पिजन होल क्या बोलता है कि it will say that when we do this what 10 divided by 3 and we take a ceiling value, we will effectively get 4. And the pigeon hole principle will tell us that there is at least one segment with a length of 4, right? And we can calculate this before itself. And instead of directly placing the dots now over any segment you try placing, we will eventually lead to an invalid solution. So that's why guys, people forget that we can effectively use the pigeonhole concept over here. है ना? It's not that ki you just learn in your mathematical class the pigeonhole principle and you cannot. This is a real world application. This is effectively a real world application. So instead of, what you could have done is that once you place this dot over here, you would have done placing dot over here, you would have placed a dot over here, and you would rely on your function. To check that कि last वाला length कितना आ गया. But उसके पहले you might have ended up placing the dots everywhere. So this is an ineffective approach. Na? This is an ineffective. It makes no sense if I can effectively calculate over here at this point that there will be at least a segment of length 4. Then why do I need to even go down this path? I know this will give me a wrong answer. So that's why we need to optimize our approach. So that's it, guys. That's it. And that's all you needed to understand over here. Let me quickly start coding over here. The first thing is that ki s dot size की value कितनी हो सकती है? If it is less than 4 and and if the s dot size is greater than 12, we are going to return a empty one. ठीक है. Otherwise we are going to do a recursion. I mean recursion मतलब all the possibilities ढूंढने वाले हैं. So before that we need to return the answer also. So vector string answer लेते हैं and we are going to return this answer. ठीक है. We are going to return this answer. And in this recursion also, we are going to pass some different things, which I'm going to explain over here. So first is like what we can do in the recursion is that obviously you need to pass the original string over here. Let's pass the original string. इसमें एक एक करके लिखता जाऊंगा ताकि आपको भी confusion ना हो. We need to pass the original string. Then we need to pass the starting index. ठीक है. To say that कि we will begin from certain point. Let's say क्योंकि we can start from this point, and this information is effectively held by the recursion. So recursion के पास ये वाला information आ गया. Now next thing is that what is the next thing? So this will be int of index, and the next thing is that कि जो current string build कर रहे हैं ना उसकी भी तो value चाहिए हमें. The current string which we are effectively building. So we have this value and we have the answer itself. We need to pass the answer itself because we'll be constructing that also on the go. So let's pass by reference, right? So now what I've effectively done is that I have ignored all the strings of length less than 4, like 0, 1, 2, 3, and all the strings with a length of greater than equal to 13 कर देते थे. ठीक है, greater than equal to 13. And अगर सॉरी ये तो ऐसे ही कर देते थे greater than 12 जो भी लिख लो as per your comfort. And after that we need to start doing our recursion, and after that we need to start doing our. But don't you think we are missing one more thing? How do we keep track of dots? So that's why we need a dot count. पहले dot count कितना होगा? 3. So let's pass the dot count as well. हो गई? Okay. So आंसर के पहले मैं अपना dot count भी भेज रहा हूँ. So see guys, I am just coding in front of you. It's like a pure. I have not memorized any solution. It's just you might think this is the thing exact replication of what might happen during the interview. I'm going to be fairly honest, right? And we are going to have a. So देखो अभी कैसा है कि we know this there will be a given string, right? There will be a given string and we need to calculate all the different possibilities. So I'll come to this dot count. अगर 0 हो गया देखो पहले अगर string को ऐसे place करते हैं ठीक है. So let's say that I'm going to give you one more thing. Let's say that if I have effectively placed number over here, so बाकी जो last segment है उसका length तो automatically we can decide. उसका length we'll know that all the remaining elements of the string will be counted as that. So that's why we are counting the dot. After placing the first string, the first string characters, the dot count will be decrement to 2.
After this point, the dot count will increment to 1. After this point, we'll call again, the dot count will equal to 0. So that's where we need to push this one. But we need to take care. We need to handle this scenario where this segment can be valid or invalid. So we need to only push this in our given answer when the segment is valid actually, guys. है ना? And a current is storing the on all the different iterations. ठीक है? The current is storing all the different iterations which are effectively performing. So एक चीज बताओ कि कितने लेंथ का प्लेस कर सकते हो? या तो एक लेंथ का प्लेस कर सकते हो, या तो 3 लेंथ का प्लेस कर सकते हो, 2 लेंथ का प्लेस कर सकते हो, या तो 3 लेंथ का प्लेस कर सकते हो. ठीक है? एंड इससे मेरा इफेक्टिव इंडेक्स बिल्ड कर सकता हूँ मैं. तो एक सबस्ट्रिंग बोल देते हैं इसको, एंड एस डॉट एफ सब एस टी आर कर देते हैं इसको. एस डॉट एफ सब एस टी आर विल बी इक्वल टू इंडेक्स प्लस इंडेक्स कॉमा आई. तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक लेंथ का कंसिडर कर रहा हूँ, फिर 2 लेंथ का कंसिडर कर रहा हूँ, फिर 3 लेंथ का कंसिडर कर रहा हूँ, एंड देन आई एम गोइंग टू कॉल द recursion. But don't you think, guys, I'm missing something? Why do I automatically call the recursion? I need to check if it is valid or not, right? I need to check if it is valid or not. Let's make a valid or a function also. So what it will do is that it will check if the value lie between the range of 0 to 255 and if the segment length is valid or not, right? And guys, also try to understand. I have done another mistake over here. Also try to understand. अगर तुम different possibility consider कर रहे हो, let's say that कि I am going to give you corner cases where my code will fail. Let's say that कि I have considered 3 over here, I have considered 3 over here, and I have considered 3 over here, right? And what might happen is that after this string, मतलब string में सिर्फ 2 ही element है, ठीक है? String में सिर्फ 2 ही element है. Do you think, guys, do you think it is valid to iterate over the length of 1, iterate over length of 2, iterate over length of 3? No, it only makes sense. We should not iterate over the length of 3 because उतने elements है ही नहीं हमारे given string में. ठीक है, उतने elements है ही नहीं. So we need to be extra careful when handling this scenario. So what we can effectively do is that if the index plus I क्या हो गया तुम्हारा इधर? इंडेक्स मतलब ये पोजीशन पे, मतलब ये वैल्यू है ए बी सी, और यहाँ पे मान लो कि इंडेक्स यहाँ पे कुछ है तुम्हारा, इंडेक्स यहाँ पे है कुछ, एंड इसमें लेंथ ऐड करोगे, लेंथ कितना आएगा? 1. ठीक है, रिमेंबर दैट लेंथ कितना आ सकता है? 1 आ सकता है, फिर 2 आ सकता है, एंड वी शुड एंश्योर दैट this length is not exceeding the index plus length का value, is not exceeding the s dot size. ठीक है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हमें. तो इसको इफेक्टिवली कैसे कैलकुलेट करेंगे कि देखना, अगर इंडेक्स प्लस लेंथ है, ठीक है, इंडेक्स प्लस लेंथ कितना आ गया इधर? देखो पहले तो हमने ए कंसिडर किया, ठीक है. यू वुड बी हैविंग कंफ्यूजन बिकॉज ऑफ दिस सब एसटीआर क्या करता है ना कि एक इंडेक्स का वैल्यू लेता है एंड उसमें बोलता है कि ये लेंथ का मुझे एक्सट्रैक्ट करके दे दो. ठीक है, अगर सिंपल शब्द में बताऊं, मैं अगर एबीसीडी ले रहा हूँ एंड इस पर मैंने कॉल किया विद इंडेक्स आई इज इक्वल टू 0 एंड लेंथ इक्वल टू 1, ये एक्सट्रैक्ट करेगा क्या? सिर्फ ए. ठीक है, इसलिए मैंने लेंथ 1 लिया. जस्ट रिमेंबर दैट. सो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि मान लो कि यहाँ पे ए बी सी है, ठीक है, एंड लेट्स से दैट सी नहीं है इधर, लेट्स से दैट सी नहीं है, let's use my memory operation, and let's say that कि i की इंडेक्स की वैल्यू 0 है, इंडेक्स की वैल्यू 0 है, तो वी नो दैट कि वी कैन नॉट कंसिडर लेंथ ऑफ 3, वी कैन नॉट कंसिडर लेंथ ऑफ 3. सो इसमें जब लेंथ ऐड करोगे 3 ऐड करोगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? आई प्लस 3, 0 प्लस 3 यानी कि 3 हो जाएगा, एंड इफेक्टिवली इसका लेंथ कितना है? एस डॉट साइज का 2. सो हम क्या करेंगे कि इफ आई प्लस लेंथ इंडेक्स प्लस आई जो भी है, आई ले लो, यहाँ पे आई क्या हो गया? अपना लेंथ हो गया. ये इंडेक्स प्लस लेंथ इज ग्रेटर देन साइज ऑफ स्ट्रिंग, देन वी कंटिन्यू. वी डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग, है ना, मतलब कुछ नहीं करना है इसकी जगह. तो दिस इज अनदर ऑप्टिमाइजेशन व्हिच यू कैन इफेक्टिवली डू. एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट ओवर हियर यू नीड टू इंश्योर कि तो वैल्यूज हो गए ना, अभी इसको वैलिड्स को देखना पड़ेगा वैलिड है कि नहीं, तो हम लोग उस पर आते हैं. इफ इट इज वैलिड और नॉट, लेट्स से दैट it does some operation and it returns if it is valid or not. I'm going to write the code for that as well, and let's say is valid हमने लिखा इधर. ठीक है, अगर is valid है true तो कंटिन्यू करेंगे, अगर is valid नहीं है तो हम क्या करेंगे? अगर स्ट्रिंग ही वैलिड नहीं है तो क्या करेंगे? इधर से
ब्रेक करेंगे कि कंटिन्यू करेंगे, बताओ पहले। ब्रेक करेंगे कि कंटिन्यू करेंगे, तुम बताओ क्या करना है फिर। क्यों, देखना, अगर मैंने स्ट्रिंग सेलेक्ट किया, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने अगर स्ट्रिंग सेलेक्ट किया 255, ठीक है, अब एक बात बताओ, डू यू थिंक वी शुड कंटिन्यू और ब्रेक ओवर? 255 पे तो कुछ वैलिड आएगा इसका, ठीक है, बहुत अच्छे। बट अगर बात कर लो 355 आ गया हमारा, कुछ ऐसा 355 वैल्यूज, एंड इट बिकम्स वेरी ग्रेटर वैल्यू, सो वी शुड इफेक्टिवली ब्रेक आउट ऑफ दिस, वी शुड इफेक्टिवली ब्रेक आउट ऑफ दिस, नॉट कंटिन्यू, बिकॉज इसके फर्दर वाले पॉसिबिलिटीज क्यों कंसिडर करने तुम्हें, दिस पार्ट ऑलरेडी बिकम्स इनवैलिड, सो that was one thing. And let's say that ki after that we will call the recursion again with this new index. इंडेक्स क्या हो जाएगा अभी, आई, इंडेक्स प्लस आई हो जाएगा, और तुम्हारा करंट क्या हो जाएगा, करंट में तुम्हें डॉट भी डालना है, याद रखना, करंट में डॉट ऐड करो, पहले तो करंट एम्प्टी रहेगा, ठीक है, जब इनिशियली स्ट्रिंग पास करे तो करंट एम्प्टी होगा, देन आफ्टर दैट वी ऐड द डॉट, सो वी कैन बेसिकली टाइप दिस सब स्ट्रिंग प्लस डॉट, ठीक है, एंड आई विल टेल यू हाउ विल हैंडल लास्ट केस ओवर हियर व्हेन डॉट काउंट इज इक्वल टू 0। फिर डॉट काउंट को हमें डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, डॉट काउंट -1 कर दिया हमने, फिर आंसर हम पास कर रहे हैं, ओके, चलो यहाँ तक तो कहानी लिख दी हमने, ठीक है, एंड ये चलता जाएगा लूप में अपना, इसको चलने दो। फिर अभी देखेंगे कि यहाँ पे भी अभी हमें लास्ट सेगमेंट उठाना है, जब डॉट काउंट 0 हो जाएगा तो मतलब क्या, हमें लास्ट सेगमेंट उठाना है, लास्ट सेगमेंट लिखते हैं इसको, लास्ट सेगमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें बस सब एस डाल देना अपने को, एंड इसको इंडेक्स से पास कर देना, फिर इस पे भी चेक करना है कि इफ दिस सेगमेंट इज वैलिड और नॉट, वैलिड पे फिर से जाएंगे हम लोग, वैलिड का मतलब क्या होगा, एंड देखो यहाँ पे थोड़ा गलत कर दिया मैंने, इसलिए बोलता हूँ कि थोड़ा सा लाइफ कोडिंग में दिक्कत हो जाता है, आई डोंट नो हाउ पीपल पुल इट ऑफ, सो अगर इज वैलिड है देन व्हाट वी कैन इफेक्टिवली डू इज दैट कि देखो अभी हमें आंसर में इंसर्ट करना, आंसर डॉट पुश बैक, ये स्ट्रिंग की वैल्यू जो होगी करंट, ठीक है, लास्ट में देखना जो जो एलिमेंट ने लास्ट में कॉल किया रहेगा उसने डॉट तो ऑटोमेटिकली अटैच किया रहेगा, तो हमें क्या करना है, करंट प्लस लास्ट सेगमेंट डालना है, ठीक है, करंट प्लस लास्ट सेगमेंट डालना है, एंड फाइनली हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है इधर से। बट डोंट यू गाइस थिंक आई हैव, मैंने तुम्हें इतना ज्ञान दिया पिजन होल प्रिंसिपल पे, डोंट यू थिंक वी नीड टू यूज अ पिजन होल एज वेल, सो या, सो देखते पहले इन रिमेनिंग एलिमेंट्स कितने होंगे, कितने होंगे रिमेनिंग एलिमेंट्स, एस डॉट साइज माइनस करंट, नहीं, ये भी नहीं होगा भाई, एस डॉट साइज माइनस करंट तो नहीं होंगे, देखो अभी तक, हाँ, तो देखो एस डॉट साइज माइनस इंडेक्स ही होगा ना यार, सॉरी, क्योंकि देखना मैं फिर से बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि देखना 255.255 हम तो एक्सपेक्टिवली इंडेक्स ऐसे कैलकुलेट करें ना, इंडेक्स की वैल्यू, मैं क्या सोचने लगा था, डॉट के बारे में सोचने लगा था, ठीक है, तो अभी क्या, अभी रिमेनिंग एलिमेंट्स कितने होंगे, मान लो स्ट्रिंग का पूरा लेंथ है ये, और इसका रिमेनिंग एलिमेंट्स इंडेक्स मेरा इतना है, तो यहाँ पे ये वाली लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेंथ माइनस इंडेक्स, यानी कि एस डॉट साइज, जो ओरिजिनल स्ट्रिंग की साइज माइनस इंडेक्स, एंड इन सेगमेंट्स कितने हो जाएंगे, रिमेनिंग सेगमेंट, मैंने बताया था डॉट काउंट +1, ठीक है, फिर इसमें एक चीज कैलकुलेट करेंगे, दो चीज होगा एक्चुअली, देखो मान लो हमें क्या करना था कि इसका सीलिंग निकालना था, हमें इसका सीलिंग निकालना था, सीलिंग कैसे निकालते थे, रिमेनिंग एलिमेंट्स डिवाइड बाय रिमेनिंग, बहुत बुरी राइटिंग है भाई, रिमेनिंग एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय रिमेनिंग सेगमेंट काउंट, तो इसकी सीलिंग वैल्यू निकालेंगे, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, रिमेनिंग एलिमेंट्स शुड बी लेस देन इक्वल टू रिमेनिंग सेगमेंट, और रिमेनिंग सेगमेंट की कितनी वैल्यू हो सकती है, 3 × 3 हो सकती है, तो अगर देखना ये एक्चुअली नहीं ग्रेटर देन 3 आएगा, सॉरी यहाँ पे ग्रेटर देन 3 आएगा, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 3 हो गई तो हमारे तो डूम हो गया ना, और सीलिंग फंक्शन देखो अगर तुम इस पे डिवाइड करोगे ना इधर डायरेक्टली तो वैल्यू गलत आ जाएगा तुम्हारा, क्योंकि वो इंटीजर डिविजन ये सब हैंडल नहीं कर रहा है इंटरनली, और इसको राउंड ऑफ कर देगा, सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट थिंग, एंड द फाइनल थिंग ऑल्सो इज दैट कि मान लो कि रिमेनिंग एलिमेंट इज लेस देन द सेगमेंट, तभी तो इनवैलिड आ जाएगा, मतलब तुम्हारे पास
segments ज़्यादा है और remaining elements कम है, तो even in that case it does not make any sense. So let me see कि मैंने सब सही लिखा है कि I know spelling का थोड़ा बहुत mistake हो जाता है मेरे से, but fine. So in this given scenario also we will just return out of here. We'll not do anything. We'll just end the recursion. And yeah, that's pretty much. Now we need to write the valid वाला part. Now valid वाला part में क्या करना है कि मान के चलो कि if t dot size is greater than 1, है ना, and if t dot 0 is equal to, मतलब पहला ही एलिमेंट देखो, उसका मतलब कैसा हो गया कि ये सेगमेंट 0 1 है, ठीक है। अगर इसकी साइज क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन 2 हो जाएगी ये सेगमेंट की, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी, एंड सीन क्या होगा कि दिस सेगमेंट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 itself. If this segment always start from 0, we need to ignore that, so we need to return false over here. This segment is not valid. Otherwise we need to do some operation also, guys. Integer value, let's say that s2i से integer value निकाल रहे हैं इसका, रिटर्न। अभी अभी देखना कि इसमें कैसे करेंगे, एक और ऑपरेशन कर सकते हैं इसमें। इफ इंटीजर वैल्यू is greater than equal to 0 and integer value is less than equal to 255, तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, नहीं तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। बट नोट गाइस वन थिंग ऑल्सो, just for the safety purpose, if the segment size is also 0, जो हो सकता है कब, जब फॉर द लास्ट सेगमेंट, देखो यही गलती करते हैं हम लोग कभी कभार, मान लो कि 4 4 4 ऐसे करके हम लोग ने कुछ सिलेक्ट कर दिया और लास्ट में कुछ बचा ही नहीं सेगमेंट का साइज, मतलब कुछ वैसा हो सकता है ना। सो इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग दैट योर इज वैलिड फंक्शन is written in such a way that it can handle all kind of different scenarios. So that's why we return. For even the size with 0, we just return false. क्योंकि हो सकता है कि in future someone can use this valid function and say that कि hey, if the size is 0, then we need to take care of that. So when this is defined, अगर t dot size के greater than 1 है, तो अगर the index is starting from 0, we will return false. Otherwise, we are going to convert it to integer value using s.string.integer function. We're going to check if the integer value is greater than or equal to 0, and if it is less than or equal to 2255, we can return true. Otherwise, we return false. Otherwise, the string is not valid. ये कब होगा, इधर से जाएगा ही नहीं अंदर, मतलब 355 आएगा डायरेक्ट इधर आ जाएगा अपना। सो दिस इज डिफाइंड, राइट, एंड हमने ये भी वैलिड कर लिया, इधर भी वैलिडेट कर लिया कि वी कैन कंटिन्यू ऑन दिस सेगमेंट, राइट। एंड इफ द डॉट काउंट ऑल्सो हम लोग देख रहे हैं कि वो प्रॉपर्ली डिक्रीमेंट हो रहा है, एंड जैसे डॉट काउंट इक्वल टू 0 हो जाएगा, एंड देन वी गोना सिलेक्ट द लास्ट सेगमेंट, वी गोना वैलिडेट द लास्ट सेगमेंट ओवर हियर, and we're gonna push it back to our original answer, which we are effectively returning from this point. Now, what we are effectively gonna do is that we are going to iterate for all the different possible length 1, 2, and 3. And at any point we found that if the length is greater than index plus size is greater than size, then it makes no sense. It makes no sense. And actually इधर ना break भी कर सकते हो तुम लोग, क्योंकि anything after that, anything after this point is just gonna be brutal for you guys. Why? Tell me why. Because देखो सीन क्या है ना कि टू मान लो तुम्हारे पास दो ही लेंथ का है, ठीक है, यू सेलेक्टेड लेंथ इज इक्वल टू 1, नाउ इट डज नॉट मेक सेंस टू सेलेक्ट ऑफ 2, दैट डज नॉट मेक सेंस ऑफ 3, so it just break out of your 2 at any point, right? You have already selected length 1, just say that, and now for 2 and 3 does not make sense to make an iteration, just break this loop itself. So this is more effectively over here. And finally thing is that we are fetching the substring, again validating. अगर valid नहीं है तो again break it, because इसके आगे तो कुछ valid मिलने ही नहीं वाला मेरे पास। बट वेट, कैन इट बी, जस्ट कैन इट बी, आई एम जस्ट थिंकिंग, जैसे कि देख लो कि मेरे पास 0 1 आया, वो तो इनवैलिड हो गया, ठीक है। मैं सारी केसेस तुम्हारे के साथ डिस्कस करूँ अभी। 0 1 आया, ये इनवैलिड है, ठीक है। अब इसके बाद जितने भी नंबर आएगा 0 1 2 0 1 3, इट ऑल ऑटोमेटिकली बिकम्स इनवैलिड फॉर मी। अगर मेरे पास 93 आया तो क्या होगा, तो भी ये वैलिड हो जाएगा। And after that, if we try to include any given, we can just break out of here. Yeah, it makes sense also, guys. It makes perfect sense to break from here. And after that, we will keep on iterating. We will add the index I, we will add the substring,
some dot operator will decrement the dot count and we will push this answer itself. And ये देखो ये क्या कर दिया मैंने, return ये करना था empty, and let's see if it runs or not. I'm not sure. Oh, I'm not sure what are the mistakes which might I have done, but let's be also perfect. Let's see ki we are right. I will be surprised if my code runs on the first go. My God, man, crazy हो गए तो. मतलब लॉजिक देख रहे हो तुम, लॉजिक देख रहे हो, it beats all the 100%. It's like a 100% complete solution. So yeah, guys, this is how your logic works. And when your logic works, it's truly awesome to see your code working. Anyways, I hope you enjoyed the video. Give a thumbs up, like, and share with your friends. Hasta la vista.